Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and this class all about the questions that we guys need to prepare for the upcoming exams of MET 1. So MET, that is Microeconomic Analysis. अब यहाँ पे हमारे पास we don't have much time, but what to do? Seriously, what to do at the short span of time so that we can get good marks in this particular paper. So guys, you just need to prepare these questions. Seriously, just these questions, and then you're going to crack this paper easily. I don't know whether you're going to do it now or after some time, but make sure paper इसके बाद नहीं आना. You guys just rely on these. Come to the basic terms. So the first thing what we need to do, need to subscribe the channel immediately so that you can get all the videos related with this answers and the expected questions of your paper. So the very first question, I'm not wasting time. What do you mean by the pure public good? I repeat, this is something that we need to clear. The first one, pure public good. The first, it can be a short note, it can be a full-fledged question. You guys better prepare this question, the pure public good. Come to the second one. How would you differentiate a static game from the dynamic game? So the difference between static and dynamic game. The first one, pure public good. The second one, difference between static and dynamic game. Come up to the third one. I hope you guys are writing this. Can I explain how and in what circumstances market would lead to Pareto efficient allocation resources? So what does it mean by this? The Pareto efficient allocation resources. So this would definitely come in a paper. And I really want you guys to prepare this question at a first shot. कि आपने कहना है ये तो कर ही लेना है. Public good, you can watch the video over there. आपको मिल जाएगी. Difference between static and dynamic game, ये भी मिल जाएगी. But this, you guys should not leave this. I repeat, the third one, it is Pareto efficient allocation of resources. So what does mean by the Pareto efficient allocation resources? That is the third one. Jump up to the next one. Write short on the Rawls theory of justice. I should not write down this क्योंकि ये तो आपको याद होगा. I hope आपने किया होगा. That is, write a short note on Rawls theory of justice. लिख देते हैं यहाँ. बच्चे बोले फिर सर वो रह गया था. Now the big question that comes to mind of students and microeconomic justice theory क्या करी? Seriously, ये justice theory यहाँ पे क्या करेंगे जब हम इसको read करेंगे? We'll get to know about this. The next one we are having. Why would you say? I repeat. Why would you say Bohm's model of sales maximization? Bohm's model of sales maximization is an alternative theory of firm. Yes, it is an alternative theory of firm. Am I wasting the time? Seriously, I'm not going to write on board. So आप लोग लिख सकते हैं. मेरी पिच ज़्यादा तेज नहीं रहेगी. आप लोग आराम से लिखें ताकि हम टाइम को सेव कर पाएं और फटाफट सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लें. The question is, why would you say the Bohm's model of sales maximization is an alternative theory of firm? Which features of his model? I repeat, which features of his model may be considered to support your viewpoint? तो सर बॉमल की थ्योरी को मुझे क्लियर करना होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी को पूरा क्लियर करना होगा और आपको उसके व्यू पॉइंट डिफाइन करने होंगे जिनसे आप एग्री करते हो. Come next one. That's good question. Write a short on VNM utility function. What does mean by the VNM utility function? So ये आएगा शॉर्ट नोट पे तो कंफर्म मिल जाएगा आपको. Next one.
Differentiate between moral hazard and adverse selection. So what do you mean by moral hazard? ये moral hazard वाला तो सर आई थिंक ये बार बार रिपीटेड आता है शॉर्ट नोट्स में, तो बेटर कि आप लोग इसको कर लेंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉट टेलिंग. आई रिपीट, हॉट टेलिंग लेमा. व्हाट डू यू मीन बाय हॉट टेलिंग लेमा? सर शॉर्ट नोट वाले कम से कम 4 से 5 बता चुका हूं, मेरे ख्याल से सबके सब फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, differentiate between first and third degree of price discrimination. When I'm talking about price discrimination, it is really important. And while talking microeconomy, हाँ important है, बिल्कुल है, किस तरह से हम डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे पास, distinguish between the first and the third degree of price discrimination. Next again, distinguish between the pure strategy, Nash equilibrium and mixed strategy equilibrium. Pure strategy, Nash equilibrium and mixed strategy equilibrium. When would you use mixed strategy equilibrium? सर 3 आ गए. पहला प्योर, Nash equilibrium, mixed strategy, और mixed strategy को कब यूज करते हैं equilibrium पे? तो 3 5 तीनों के तीनों क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट वन, राइट शॉर्ट ऑन एनवलप थ्योरम. ये कौन सा थ्योरम था, हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी? So you get confused in this particular paper. ये पेपर जब अपनी कई सारी चीज लेके आता है, तो हमें इसको क्लियर करना है और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है. Jump on next one. क्या था, why is there a social cost of monopoly power? Why is there a social cost of monopoly power? Suppose a production, I repeat, suppose a production process gives rise to negative externalities. Negative externalities. What do you answer on the social cost of monopoly? Change, explain. Jump on next one. Differentiate between ISO cost and ISO grant functions. यार कई बच्चे कहते हैं सर हमें वीडियोस नहीं मिल रही हैं, आपने प्लेलिस्ट तैयार नहीं की. विद इन वीक टाइम आई एम गोइंग टू मेक अ प्लेलिस्ट. सबसे पहले पेपर हो जाएगा, मैं उससे पहले कोशिश करूंगा मैं कि मैं उस प्लेलिस्ट को तैयार करके सारी वीडियोस डाल दूं ताकि आप आराम से गो थ्रू कर पाएं. Differentiate between ISO cost and ISO grant functions. Next one, differentiate between public good and merit goods. So what is public good and merit goods? Next we are having, can I differentiate between Cobb Douglas and CES production function? Cobb Douglas and CES production functions. Next one, present and explain Slotsky theorem. पहला graphically and mathematically. सर ग्राफिकली तो ठीक था, मैथमेटिकली थोड़ा टेढ़ा हो गया क्योंकि मैथ्स अच्छा नहीं है कई स्टूडेंट्स का, तो कहेंगे यार इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं. जिनका मैथ्स अच्छा है कंफर्म गो विद दिस. नेक्स्ट वन, अगेन अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट वेलफेयर इकोनॉमी. आई रिपीट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेलफेयर इकोनॉमी. द नेक्स्ट वन रियली गुड. क्या था डिफरेंस बिटवीन रिस्क पुलिंग एंड रिस्क स्प्रेडिंग. रिस्क पुलिंग एंड रिस्क स्प्रेडिंग, अब दोनों में ही हमें डिफरेंशिएट करना है. वी नीड टू गो इन डिटेल्स ताकि चीजों को बड़ा आराम से समझा पाए. क्या व्हाट इज द एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम? थोड़ा लीक से हट के क्वेश्चन हो गया और ये कंफर्म पेपर में आने के चांसेस हैं. क्या व्हाट इज एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम? पॉइंट आउट द इनसाइट यू गेन फ्रॉम इट्स फॉर्मुलेशन. Insight you gain from its formulation. Does market signaling aviate the problem of adverse selection? क्या खत्म कर दिए? अब यहाँ मुझे पता जी मार्केट सिग्नलिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट और कैसे उसको एविएट कर दिए. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन हाउ शेफर्ड लेमा. ये मैंने पहले मेंशन किया था शॉर्ट में. एक्सप्लेन हाउ शेफर्ड लेमा कैन बी यूज्ड टू क्लीवर द प्रोडक्शन फंक्शन फ्रॉम द कॉस्ट फंक्शन. इस क्वेश्चन को प्लीज रिपीट कर दें एक बार ताकि सारे के सारे इसको पूरा क्लियर कर पाए. Can I explain how Shepard lemma can be used to cleave RID the production function from the cost function? Next, differentiate between monopoly and monophony. सर ये मोनोफोनी तो पढ़ना पड़ेगा, जिन्होंने बेसिक बैकग्राउंड नहीं किया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं की तो डेफिनेटली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में. Come on, next one we are having differentiate between external economy and diseconomies. External economy and diseconomy, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है. Next, what is the theory of second best? What is the theory of second best?
ये सेकंड बेस्ट वाली थ्योरी क्या है, इसको थोड़ा डिटेल नहीं पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा. राइट अ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये सबको आता होगा 100% श्योर. डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक पॉइंट प्राइसेस एंड लिमिट प्राइस. कम टू द लास्ट 5 क्वेश्चन. ऑनेस्टली द लास्ट 5 क्वेश्चन आई होप आपने सारे के सारे लिखे. कह रहा व्हाट इज वॉलरस लॉ. आई रिपीट, व्हाट इज वॉलरस लॉ. हाउ डू यू डिटरमाइन मल्टी मार्केट इक्विलिब्रियम. How do you determine multi-market equilibrium with its help? Next, what are the conditions of Pareto optimality? से Pareto पहले भी आया, शॉर्ट टर्म में आया था और डिटेल क्वेश्चन भी आया था इसका. What are the conditions of Pareto optimally? Point out the main weakness of the parental analysis. Last 3. What are the, I repeat, how do you formulate an indirect utility function? How do you formulate an indirect utility function? Discuss the information it gives in contrast to utility function. जो contrast to utility function है उसको define करता है. Write a short on consumer surplus. ये तो हम सब पढ़ते हैं. We go through by this and we'll get the basic things clear. And the last, not the least, that is differentiate between basic point prices and limit price. Basic point price and limit price. So guys, I hope that you guys are going to do this. किस तरह कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स आपके पास है. Till then, keep watching.